Football is generally about a lot of talent, but it's also about even more application of that talent, even more discipline, and how you use that talent. We've seen a number of examples, a lot of players just be very talented but not make it to the top as promised, at least initially, because of multiple reasons. आज जिस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर पॉल पोग्बा, उसके केस में आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज केसेस वर उसके खुद के, पर ऑल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज उनके अराउंड, उस प्लेयर के अराउंड जो हुआ है, फैमिली से जो हुआ है उसकी, दैट जस्ट मेक्स फॉर अ वेरी वियर्डली इंटरेस्टिंग केस स्टडी. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर. आज हम बात कर रहे हैं पॉल पोग्बा की, हिज जर्नी थ्रू फुटबॉल सो फार, एंड मे बी जस्ट मे बी द फैक्ट दैट ही हैज अ चांस फॉर रिडेम्पशन. हाँ जी, शुरू किया जाए. शिवम के पास चलेंगे सबसे पहले आज, बिकॉज शिवम इज समबडी, शिवम बोथ we've actually had this conversation a lot of times before ki Paul Pogba at his best probably would have been the best midfielder in the last 10 years, but sadly not to be. Please take us through what Paul No. Pogba was and could have been. Paul Pogba, I'd say a divisive figure, if any. Mhm. Someone who has etched his name in the folklores of especially modern football or football for all time. Fair, When fair. I say etched his name in the folklore for good and bad, both reasons. Actually, for good, bad, and ugly reasons. Yes. Let's take a journey, quick one. Let's take a quick journey. लड़का यूनाइटेड के यूथ सेटअप से आया, FA कप वगैरह जीता, was shown as the biggest promise from our academy back then. Did not get the chance under Ferguson. उसी moment पे he had higher ambitions. He went to Juventus for On a I think free. free. I think he went for, right? Yeah. Earned his badges there, earned his stars there, played with Pirlo and got accolades from Pirlo, Buffon and everyone in Juventus. सीरिया वगैरह जीता, आई थिंक फाइनल भी खेला था चैंपियंस लीग का शायद. हाँ, वो आई थिंक यूनाइटेड बारसा वाला, बट नथिंग टू बी. केम बैक टू यूनाइटेड फॉर अ शिट लोड ऑफ मनी, स्पेशली फॉर अ मिडफील्डर, जो आज की डेट में कॉमन है विद एंजोज एंड अदर्स, बट अ लॉट ऑफ मनी. And could not unfortunately reach the promised land that he or we as fans or anyone just watching football thought he could. वहां से डिसअपॉइंट होने के बाद, यूनाइटेड में डिसअपॉइंट करने के बाद, एंड जस्ट अ डिसअपॉइंटिंग करियर यूनाइटेड के साथ, ही गोज बैक टू यूवेंटस एंड दैट इज वेयर द कंट्रोवर्सीज टेक ओवर द फुटबॉल कंप्लीटली. मतलब कौन से झगड़े नहीं हुए हैं उस भाई के. But before we get into the controversies, I want to just take 30 seconds and talk about the footballer that he was and he could have been. I will Honestly say speaking, one thing, as you said. 2018 World Cup, 2018 World Cup, France actually won it without ever getting out of second gear, and a huge part of that was Paul Pogba. Was Paul Pogba. बहुत सारे प्लेयर्स याद करते हैं लोग, एम्बापे का अपराइज याद करते हैं, ग्रीजमैन का परफॉर्मेंस याद करते हैं, बट पॉल पोग्बा Kante के was बिना वो brilliant. वर्ल्ड नहीं होना था, कब नहीं जीत सकते, because and he he was was running the phenomenal. team, he was running the midfield. हाँ, and And he easily was doing that the too. same, exactly. He was doing the same in Juventus in a Yes, midfield that had Pirlo and Pirlo, Marchisio. Marchisio, तो ऐसे प्लेयर्स के आपको, साथ. आप उस लेवल के टैलेंट, मतलब ड्रिबलिंग वाज ग्रेट, लॉन्ग बॉल ग्रेट, shooting great, he could track Great. back with energy. तो he had it all to be the complete midfielder. He did. जो हम तुझे I हिस्टोरिकली think जितने हाँ मिडफील्डर्स की हाँ बात करते हैं, मतलब सीडॉर्फ की बात हो गई आपका, और इस टाइप के प्लेयर्स की बात हो गई, he had it all in him. Then उसके everything. बाद कंट्रोवर्सीज हिट, एंड वैभव ने लिस्ट बना के रखी है कंट्रोवर्सीज की, तो हाँ, हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके वैभव के पास चलते हैं. सी, पहली बात, एज यू नो, यूनाइटेड ने पहले फ्री में एंड विद अ वेरी लेस अमाउंट जो जुवे गया, जुवे से बहुत पैसा, जुवे को हमने पैसे उसको दिए, एंड ही केम 100 आई थिंक 100. हाँ, उस टाइम पे रिकॉर्ड ट्रांसफर था उस टाइम का. वॉन अस द यूरोपा, वॉन उस टाइम पे आई थिंक यूरोपा जीते थे हम लोग, उसी की वजह से FA जीते थे हम. डिड अ ग्रेट टर्न टू यूनाइटेड. फिर मोरिनियो के साथ वो भसड़ हो गई उसकी, एंड ही वेंट अवे फॉर फ्री अगेन टू यूवे. फिर हमारे इधर एक और बार पैसा लेके आया इधर, उसमें भी फिर नहीं चला. एंड भाई उसके बाद हुआ है, उसके बाद जितने भी एक कर देता हूँ क्या क्या हुआ है उसके साथ. पहले उसके बड़े भाई के साथ उसका प्रॉब्लम होता है, उसके बड़े भाई ने उसके ऊपर एलिजिटली ब्लैक मैजिक किया था, कुछ किया था. उसके बाद ब्लैक मैजिक इंसिडेंट हुआ है, देन एक्सटॉर्शन हुआ है. उसके बड़े भाई, उसके भाइयों ने उसके ऊपर, फैमिलीज ने उसके ऊपर बोला कि भाई 2-2.5 मिलियन दे, नहीं तो तुझे मरवा देंगे. फिर वो एक और केस हो गया. फिर अभी जो जिसके लिए बैन हुआ था वो था कि एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उसने लिए थे रिपोर्टेडली, एंड उसमें वो अपेरेंटली लिए थे, एंड प्रूफ भी हुआ था, एंड ही एडमिटेड आल्सो. उसी की वजह से 1 साल 2 साल का था,
उसके बाद उसको 1 साल में कन्वर्ट हो गया था, इसी वजह से इस बार खेल पा रहा है, नहीं तो वो भी चला गया था पूरा. And now, after all this, he is coming back to football. He is coming back to football with a Champions League club. He is coming back with AS Monaco from France, from the French league. And देखते हैं guys, फ्रेंच लीग में ऑलरेडी एस मोनाको रेक्स भाई के फेवरेट प्लेयर फाती को खरीद चुके हैं ये लोग. अभी ये लोग ओनाना को खरीदने के लिए आ रहे हैं ये लोग. एंड नाउ पोग्बा has signed a 2 years contract with them. So let's see what happens. Okay, so in all of this, like हमने बात करी कि भैया ये भी हो गया, ये भी हो गया. मतलब यार इससे बुरा क्या ही होगा किसी बंदे के साथ जब उसके खुद का भाई और भाई के दोस्त मिलके उसको डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे नहीं देगा तो मार देंगे. तो उससे ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा किसी के साथ, है ना? बट एग्जैक्टली. सो बट दिस इज वेयर आई विल टॉक टू रेक्स अबाउट दिस बिकॉज he's somebody who follows these things very closely and he's been seeing a lot of young players recently. We see a lot of young players and Pogba was one of them who actually had this tendency to give into his flamboyance. Exactly. कि फुटबॉल के बाहर भी उसका बहुत कुछ था. मतलब आप अगर बात करते हो, अगेन जो मैंने नाम लिए कुछ जैसे सीडॉर्फ का नाम ले लो, आप उस टाइम के स्कोल्स, जेरार्ड, इन सब का नाम ले लो. फुटबॉल वाज द मेन थिंग. पोग्बा एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि फुटबॉल शायद नंबर 1 नहीं था. शायद मे बी. क्या लगता है रेक्स भाई, वाज दैट द केस? बट आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब नहीं हुआ उसके साथ, but was that also एक major factor? काइंड ऑफ लगता है वैसा ही, क्योंकि मेरा जो पर्सनल जर्नी है फुटबॉल में, मेरा फुटबॉल वर्ल्ड कप मैंने जो पहला वाला देखा था 2014 वाला तो उस टाइम पे क्या है ना, न्यूज़पेपर का कल्चर बहुत ज्यादा था उस टाइम पे. मतलब इनिशियल इयर्स में, मतलब इंटरनेट तो फटा नहीं था, 2016 के बाद फटा है इंटरनेट. तो फ्रांस के साथ ना एक नाम हमेशा जुड़ता था कि ये प्लेयर है जो सब कुछ कर रहा है, वो था पोग्बा. मतलब उस टाइम पे वो यंग प्रोडिजी था और वो फ्रांस टीम को मतलब कैरी कर रहा था अकेले. तो वैसा कुछ इम्पैक्ट था उस प्लेयर का तब. मतलब मैंने जस्ट फुटबॉल देखना शुरू किया था उस टाइम पे. मतलब वो होता है ना कि आप भाई जिंदगी भर में आपने सिर्फ क्रिकेट ही देखा है, आप आ रहे हो फुटबॉल में और यूवे का नाम ही पता चला कि भाई पॉल पोग्बा की वजह से. फिर उसके वॉलीज, उसके फिनिशेस, लगता था कि भाई ये प्लेयर तो है, कुछ तो करेगा. लेकिन भाई कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी में फंसते चले गए. और जो मतलब भाई उसके करियर में मतलब अभी तो गोल्स और अचीवमेंट से ज्यादा भाई डॉक्यूमेंट्री बन रहे हैं. भाई हम सबको एक वीडियो पता है जो मोरिनियो और उसकी वीडियो थी कि मोरिनियो कुछ दिखा रहा था कि भाई मार्शियल तो ऐसा, राशफोर्ड तो ऐसा रन बनाएगा और पोग्बा बैक मींस लिटरली अपने हाथ से एक क्रॉस देगा एंड आई नो यू कैन डू इट. एंड भाई उसके बाद वाला मैचेस में उसने एक क्रॉस दिया, अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं हो गया, बट एग्जैक्टली वही क्रॉस था. इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही वाज. एंड सबको पता है एम्बापे वाला गोल था जो सेमीफाइनल, आई थिंक सो, एम्बापे को जो वॉली मिली थी ना, सब बोलते हैं कि वॉली बहुत सेक्सी कन्वर्ट किया था, बट किसी को वो साला वॉली किसने दी थी, वो पोग्बा था. सही बात है. तो शिवम, अब जैसे हमने बात करी, ही इज गोइंग टू मोनाको सॉरी, AS Monaco at one point was the big spending huge club and suddenly सब कुछ फट गया उनका. अब धीरे-धीरे करके they're coming back with a lot more sustainable project. सील रहे थोड़ा ये लोग, सील के अभी थोड़ा आए हैं ये लोग. तो पोग्बा से क्या एक्सपेक्टेशन है going into this project of sorts? Honestly, a player who hasn't played football for 2 years तो ले ही लो. Hardly and not played properly for 3-4 years. So 3 years. Injuries बहुत हुई हैं. Injuries बहुत हुई हैं उसको. Before all this, he was not playing. After United, when he went back to Juve, he wasn't able to play much. United में injury शुरू हो गई थी उसको. वहीं end में he wasn't, and then ठीक है, it was easier to let him go. I honestly have no expectations abhi. I do not know what I'll expect from a player who hasn't played football in 3 years almost, more maybe. We know the talent. We've spoken about the talent, what he's done with France. As a United fan, I have seen his talent up close. His debut match, I
saw him and I thought, wow, this lad can do everything. If he wants to, he can do everything on the pitch. He still, I'm sure, has that talent because वो natural talent था उसका शुरू से. But क्या अब fitness उसको कितना allow करेगी, उसकी क्या इंजरीज हैं, क्या उसका मेंटल स्टेट है, जो पहले भी wasn't the strongest, and that is why that was the roadblock for him in his career. And we are talking about a World Cup winner, and we're still talking about negatives. That is the potential that he had, and that's why we have to use such term. I do not know what to expect from him. I do not know क्या दिखेगा. Will it be, क्या वो sustainable खेलेगा भी या नहीं? I do hope to see it. He is another player like Sujay, you and I talk about, like we mentioned on this on these videos. He is a flair player जिसको देख के especially neutral fan को अच्छा ही लगेगा if he is on his form, and we'd love to see that, and we love a redemption story as well, wouldn't we? United के लिए ना कर पाया, अपना career end अच्छे से करे. It will be a good swan song, but will it be? Honestly, I have no clue. Age क्या है उसकी? Age क्या है उसकी? 32 है. 32. He has some years, है ना? देखो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसको मोनाको में. वैसे एक इंटरेस्टिंग टेक है नहीं कि पोग्बा इज लाइक अ ब्राजीलियन इन द फ्रेंच टीम. हाँ, नहीं लगता फुल था उसका. भाई बहुत सारे ब्राजीलियंस का ऐसे ही हुआ है करियर. नहीं भाई, वही था ना. लिटरली he has the talent, he has the skill, he has everything. Only he has the also the जो ब्राजीलियंस के साथ होता है कि भाई उनकी नाइट लाइफ बहुत ब्राइट होती है, उनके फुटबॉल वो सब था. सिर्फ था कि भाई फ्रेंच था, वो ब्राजीलियन नहीं था. My expectation for Pogba, because when I started watching football, he was the one who I saw first. So मुझे ये लगा था कि ये बंदा in the age of Ronaldo, Messi and everyone else, ये बंदा भाई is a one of Ballon d'Or candidate. ये फ्यूचर में huge star यार. 2018 के आसपास he was a huge star. हम लगा था. But after that अभी AS मोनाको जो कर रही है, अभी फाती को साइन किया ये लोगों ने अभी एक अच्छा गोलकीपर खोज रहे हैं, and they're spending a lot. अभी if they get 40% of what Pogba was at United, at Juve, at anything, भाई मैं बोल रहा हूँ ये लोग खोद देंगे टीमों को UCL में. क्योंकि पहली बात तो ये फ्रेंच लीग से आते हैं, लिटरली डिफेंस इनकी लिटरली काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ही रहती है इनकी, एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट दिस सीजन. हो सकता है बिकॉज वी ऑल नो फाती का भी एक रिवेंज साइकिल चाहिए सबको. तो अगर इन दोनों का रिवेंज साइकिल मिल गया, इट विल बी अ क्या रेसिपी फॉर सेलिब्रेशन फॉर मोनाको. वो 20,000 लोग जो स्टेडियम में आते हैं उनके लिए खुश हो जाएंगे. वेरी फेयर. सो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसका, एटलीस्ट जो रिपोर्टेड है. अभी पता नहीं है कुछ एक्चुअली मोनाको ने कुछ नहीं ऑफिशियल किया. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एट 32. ही इज वर्किंग, ही लुक्स वेरी फिट. अगर आप उसका इंस्टाग्राम वगैरह खोलो, ही लुक्स नहीं, बट राइट दीस डेज ही इज बीन ट्रेनिंग एंड ऑल, तो ही लुक्स वेरी फिट. तो रेक्स से अगर शुरू करें, एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम पोग्बा इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कैन बिकम इन दीस 2 years if he keeps his head on? Obviously भाई हेड ऑन कर लिया तो कुछ भी कर लेगा वो बंदा. लेकिन मैं बस इतना उम्मीद कर रहा हूँ that I could see that old player in him. वो दिख जाए बस. क्योंकि अभी तो मोनाको is just accumulating so many Prince players at the moment. पार्टी यहाँ पे पोग्बा, फिर अभी आ रहा है ओनाना का लिंक भी आ रहा है. भाई पता नहीं क्या कर रही है. तो सही बात है. एंड वो जो वैभव ने बोला अभी कि अगर सबका वो साइकिल मतलब एक रिजुवेनेशन साइकिल इकट्ठा हो गया तो बढ़िया हो जाएगा. बट अगर इनमें से ये टुकड़ा के में उल्टा चला गया तो नहीं, बट अगर उल्टा चला गया तो हर आशिक आईएएस थोड़ा बन जाता है. देखो उनकी फ्रेंच लीग तो ये लोग वैसे भी फ्रेंच लीग में जैसे टीम बना चुके हैं ये लोग, ये एवरेज परफॉर्म भी कर गए तो टॉप 3 फिनिश कर जाएंगे एएस मोनाको वाले, जितने प्लेयर्स इनके पास है अभी. ओके दैट्स बोल्ड. हाँ, बिग स्टेटमेंट है. तो लगता है क्योंकि यू नो भाई फ्रेंच फुटबॉल एंड स्टिल लिटरली बट दे विल डू गुड इन द फ्रेंच लीग ऑब्वियसली. ओके चैंपियंस लीग में इसी में बोला कि अगर इनकी साइकिल्स मिक्स्ड हो गई ना, ये फिर से मुझे लग रहा है पोग्बा वॉली देगा अपने हाथ से, फाती 1-2 ड्रिबल मार के गोल मारेगा. मुझे क्यों एक फीलिंग आ रही है, प्रेडिक्शन हो रही है. 20-30 मिलियन मिल जाएंगे उसके. सेव कर लो सब लोग, सेव कर लो ये वैभव की प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन फॉर पोग्बा. पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है कमबैक?
भाई at this moment, मोनाको ने जितने honestly, लोग इकट्ठे कर लिए ना, अगर सबका नेगेटिव कमबैक इकट्ठे हो गया ना, तो ये लोग तो ये साल्जबर्ग से बुरा हाल क्लब होगा इनका, रेलीगेट जो हर होने मैच वाला हारे थे ना साल्जबर्ग वाले। हाँ वही है, ये क्लब रेलीगेट हो जाएगा फिर। और अगर इनकी रीयूनेशन साइकिल सिंक अप कर गई तो फिर ये टॉप 3 एज वैभव सेड वुड बी इजी। टैलेंट इज होपफुली स्टिल देयर। वन थिंग I'd say is hopefully Pogba we are talking about, hopefully he has a more defined role। टैलेंट उसमें हर चीज करने का है, अगर डिफाइंड रहेगा तो आई एम श्योर वो वर्क कर पाएगा। अगर बहुत फ्री रोल दे दिया, मे बी इट माइट अगेन एंड अप हैम्परिंग द टीम एंड हिम। आई एम होपिंग पॉजिटिव, आई वुड लव टू सी हिम फिटनेस प्ले वेल, होगी, द टीम प्ले वेल, फिटनेस होगी फॉर द फिटनेस सीजन। रखे, हाँ फिटनेस रखे और सही मतलब कर पाए, आई होप बाहर सो। भी थोड़ा ठीक बट खेले। हाँ घर बट फुटबॉल तो और वो 100 यार्ड And I के बीच में तो खेलेगा अच्छा, बट बाहर ठीक खेले एंड बाहर अपना भी घर ठीक खेले, संभाले ठीक से। हाँ Exactly. I'd love to क्योंकि see उसका him do बहुत well, अच्छा है। उसके I love to see him do well, उसके and I'd be घर वाले उसके twitching पीछे him। ना खींचे। हाँ फिर से कहीं और से केस आ रहे हो, बट हाँ I'd say But I think can you, I'll tune in to if watch him play once at least। slightly weird joke, but if it is his family doing it, can you still call it black magic, or is it just magic? Hashtag ban होने वाले हैं हम लोग। आज ही बैन हूं मैं। ये गलत हो गया। People can leave their comments on this, do not actually, इस वाले पे comments off कर देंगे। कोई नहीं, but coming back to that, see, honestly speaking, there is something to be said about this whole thing of match fitness versus Instagram fitness. That is a big difference, no doubt Big about it. difference, big difference। पूरा सीजन खेल पाना is going to be a big challenge because he did not do that when he was playing before the bans also. मैन यूनाइटेड में उसका इंजरी इश्यूज काफी सीरियसली शुरू हो गए थे। Yes। बहुत इंजरीज रही हैं उसको। तो आई डोंट नो हाउ ही कोप्स विद दैट, आई डोंट नो हाउ ही कोप्स विद द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज अगेन मे बी familial इश्यूज उसके सॉर्ट हो गए हैं, बट फुटबॉलिंग प्रेशर मे बी नॉट, आई डोंट नो क्या होने वाला है उसका। बिकॉज ठीक है, फ्रेंच लीग में प्रेशर थोड़ा कम है, बट यू स्टिल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट लाइक एन AS Monaco, द काइंड ऑफ मनी दे हैव स्पेंट, they would have some sort of pressure from the fans as well. They would have some sort of pressure for the results as well. They would have some sort of general expectation from a Paul Pogba being on this comeback trend. People like us will be watching. Not every game, but we'll be keeping tabs at least as to what is happening with हाँ, him. exactly. And in today's day and age, with the social media everywhere, it gets to the players. We've seen that get to a lot of players already in the last 5-6 years, more so than anything else. So that is something that can actually derail this whole comeback train hugely. And उस वजह से बहुत ही फूक के कदम रखने वाली बात है at this point in time in terms of whoever is having something of a huge expectation from Paul Pogba, मेरे हिसाब से, because नहीं वो there are too many factors at play. Too many adding to factors. that, एक मुहावरा जो है ना आपका हिंदी में, दूध का जला भी पानी फूक के पीता है। छाछ, क्या बात है? छाछ, क्या बात है? दूध I like का जला it। छाछ। छाछ पानी में चलो ये आगे है। उसके साथ ही वही है कि भाई आई थिंक ही विल डू गुड, बिकॉज मुझे जितना लग रहा है कि भाई लास्ट 2 साल में उसने जो फेस किया है, इससे बुरा क्या ही हो सकता है उसके साथ। पता लगेगा। He has won it all, Let's first see. of all. Let's see where it goes. I think that is with Bevov's positive, optimistic endeavor of it all, optimistic outlook of it all. I think that is a positive note to end this video. आप लोगों के हिसाब से क्या होने वाला है पॉल पोग्बा के साथ आगे उसके जीवन में, और कहां से उल्टा लटका मिलेगा वो नीचे कमेंट में बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, थोड़ा शेयर वेयर मारो, थोड़ा ज्यादा लोगों को जोड़ो इस कम्युनिटी में, मजा आ रहा है। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों, भाइयों को सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? कर दो, मजा आएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।